नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करते आपण मानक कैक्स क्लासेस को राधे राधे क्लास केते बेल हम एक्जाक्टली स्टार्ट है ओके तो आज आम क्वेश्चन डिस्कशन करवा कि तमरो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऊपर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऊपर क्वेश्चन ऑडिबल वॉइस क्लियर अच्छी आम ऑडिबल टू एवरीवन ऑडिबल और नॉट ऑडिबल और नॉट नमस्कार ऑडिबल वॉइस क्लियर अच्छे वॉइस क्लियर अच्छे अरे वॉइस क्लियर अच्छे तो लिखो एटलीस्ट सो दैट विल स्टार्ट वॉइस क्लियर अच्छे ऑडिबल ओके ठीक अच्छे तो स्टार्ट करवा ओके तो स्टार्ट करवा आज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट देन नेक्स्ट सेशन ऑल चैप्टर रू क्वेश्चन आसीबा इजी टू मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन रखीचे एंड धीरे धीरे तार लेवल भी हमें पढ़ेबा ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन ओके फर्स्ट क्वेश्चन दला कोन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड आर्टिकल 52 आर्टिकल 53 आर्टिकल 54 आर्टिकल 55 okay the president of india is elected by article 52 कौन कहूँ there shall be president of india संसार वासी गले भी there shall be a president of india article 53 okay article 53 जो माने भी सी कहूँ समस्त करेक्ट अच्छे ओके आर्टिकल 53 यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ओके the president of india is indirectly elected by an electoral college okay by an electoral college किए करइबे ना all elected members of lok sabha plus rajya sabha all elected members of lok sabha rajya sabha all elected members of MLAs or कौन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली all elected members of the state legislative assembly आउ elected members of कहार ना यूटीज रो जो मानकर लेजिस्लेचर अच्छी किए किए पुडुचेरी एंड दिल्ली एटा को अमेंडमेंट रे दिया जाइतिला किए कोइ परिबो हां 56 10 क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा दैट द रेस्ट इज फॉलोज ओके एक्सेप्टेड नॉमिनेटेड मेंबर एक्जेक्टली मु सब इलेक्टेड मेंबर्स लखिचे आउ एमएलसी माने भी नाहंती एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वोटिंग दियंतेनी ओके मते कहंतु जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी कहा काकू ना पुडुचेरी दिल्ली मन रखो ए पर्यंत जे एंड के इज नॉट गिवन दिल्ली पुडुचेरी जे एंड के को ए पर्यंत भी दिया जायनी ओके केबे भी मारी दबने जे एंड के थिले ओके ताले को अमेंडमेंट कहितला हां इट इज 70th कॉन्स्टिट्यूशनल 70 ओके मन रखिबो 70 ओके दिस इज 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके ओपीएससी रे ऑलरेडी पचारि सरछि एटा ओपीएससी रे ऑलरेडी क्वेश्चन पचारि सरतला ओपीएससी रे ओके 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ताला आंसर अब एटी कोन जे सी विल बी द करेक्ट आंसर इलेक्टेड एमपीस एंड एमएलएज ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त करेक्ट अच्छे वेरी गुड सेकंड क्वेश्चन कौन हम द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ओके मिनिमम एज ऑफ बिकम द पीआरआई मेंबर और म्युनिसिपैलिटीज ओके इट इज 21 देन तुम लोकसभा राज्यसभा और तुम कहि परिबो कि लोकसभा और एमएलए मानक पई दैट इज 25 राज्यसभा एमएलसीज पई दैट इज 30 देन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 35 ओके 2 नंबर सी दैट इज 35 ओके तो एक कंडीशन सब होइगरा पीआरआई पई 21 वर्ष लेजिस्लेटिव सॉरी लोकसभा पई
तो 25 और एमएलए मान 25 राज्यसभा और एमएलसी 30 एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट 30 पार्ट ऑफ राज्यसभा मेंबर्स एंड हाँ 35 इयर्स एक्जाक्टली ओके ठीक है करेक्ट अच्छे समस्त इजी क्वेश्चन नेक्स्ट द प्रेसिडेंट सबमिट्स इट्स रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट क्या रेजिग्नेशन दियंती प्रेसिडेंट सबमिट इट्स रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इट इज 35 करेक्ट अच्छे समस्त करेक्ट अच्छे ओके इजी रु मॉडरेट अच्छे लेटर फेज रे धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन पे आनिबा डोंट डर ओके द प्रेसिडेंट सबमिट्स इट्स रेजिग्नेशन टू ओके इजी क्वेश्चन एटा ओके इट इज वाइस प्रेसिडेंट ओके अच्छा प्रेसिडेंट सीट सपोज प्रेसिडेंट सीट गोटे क्वेश्चन कह क्वेश्चन आंसर कह ओके ए क्वेश्चन में तुमको एडिशनल क्वेश्चन दूची नमस्कार ओके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर ए period of 5 years from option A the date of declaration of result, second from the date or day when he enters into office both A and B none of the above नोटा आंसर कौन होगा ए क्वेश्चन आंसर कौन होगा हाँ एटा तो वाइस प्रेसिडेंट हम ए क्वेश्चन आंसर कौन होगा क्वेश्चन एक्स रा आंसर कौन होगा क्वेश्चन एक्स रा आंसर कौन क्वेश्चन दला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस for a period of 5 years केबे ठारू the day of declaration of result, second the day or time when he enters into office, okay third दला both A and B, fourth दला none of the above आंसर कौन होगा both श्रिया अच्छा both माने जो दिन डिक्लेयर हम तापर कि माने किसी कॉन्सेप्ट भी थिबा दरकार ना नहीं अरे भाई श्रिया भौणी श्रिया केमिति आपण जो बोथ कहले माने जो दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो से दिन कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस एंट्री कर कि पॉसिबल नुह ओके लॉजिक भी लगेबार अच्छी बोथ कहबार ना हाँ जो दिन ठारू ही अज्यूम्स द ऑफिस जो दिन से ऑफिस अज्यूम करेंगे अच्छा जो दिन ऑफिस अज्यूम करेंगे अच्छा गोटे क्वेश्चन आंसर कह मत जो हु विल डिसाइड इफ एनी डिस्प्यूट्स अराइजेस that the election of president जदि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कराओ ठीक अच्छे नो इशू ठीक अच्छे अरे भूल हुए लाइफ रे केड़े केड़े भूल आम कर दौचे ओके अच्छा मत हु विल डिसाइड व्हेन देयर इज ए इलेक्शन डिस्प्यूट्स अराइजेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आ को आर्टिकल जदि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कर कौन इलेक्शन डिस्प्यूट्स आसुची ताले हमें को आर्टिकल्स रे ताकू ये करबा हाँ इट विल बी सुप्रीम कोर्ट मन रख इट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन सी कोर्ट इंटरफेयर करि इवन इफ हाई कोर्ट भी नुह मन रख सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल व्हिच आर्टिकल सेज दैट व्हिच आर्टिकल को आर्टिकल कहूँ एटा को आर्टिकल जल्दी अरे आर्टिकल 71 ओके आर्टिकल 71 एते लेट को नौचन टाइम भाई अच्छा आ गोटे क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड अपॉइंटेड nominated
इलेक्टेड कौन आंसर आर्टिकल 71 करेक्ट अच्छे समस्त नो 55 नो राम भाई 55 नो 55 मैनर ऑफ इलेक्शन देइछे बट एनी इलेक्शन डिस्प्यूट जदि आसे ताहाले सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल एंड इट इज बाइंडिंग ओके आर्टिकल 71 रे कहूची कि इट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओके इट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव पावर हाँ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिलेक्टेड अपॉइंटेड नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड आंसर कौन हम okay appointed by the president article 75 says that the prime minister of India is appointed by the president okay and appointed by the president and other ministers and also appointed by the president on the advice of the kahar the prime minister next I have a question okay who decides the portfolio system among the ministry who will decide the portfolio system among the ministry first prime minister second president third party fourth none of the above answer कौन होगा next question article 675 and 164 is related to state CM okay next question a question answer कौन होगा who decide the portfolio system among the ministries कौन होगा answer first वाला PM second president third party in power fourth none of the above कौन होगा answer है अच्छा सुनीता प्राइम मिनिस्टर आउ किए हाँ इट इज ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर मन रखिबो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे बट पोर्टफोलियो सिस्टम काहा को को मिनिस्ट्री दिया जिवो केमिति रिसफल करा जिवो ऑल आर डन बाय द प्राइम मिनिस्टर वेरी गुड समस्त करेक्ट अछि वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन Which article deals with the impeachment of the president? Which article deals with the impeachment of president? Which article deals with the impeachment of the president? Impeachment of कथा कहिछ okay मन रखिबो impeachment word only for president other मानक पाई removal सब वाडे मेंशन अछि only president पाई impeachment अछि ओके हां समस्त 61 करेक्ट अछि समस्त मन रखिबो impeachment word only used for the president of India आउ समस्त जगह रे impeachment जगह रे removal word यूज होय ओके रिमूवल अच्छा इम्पीच को ग्राउंड कोन वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रे वायोलेशन अछि अच्छा कोन करिवो ना आइदर हाउस रे बिल इंट्रोड्यूस हे परिवो ओके 14 days notice period 14 days notice period okay proved misbehavior हाँ सुनीता proved misbehavior मु तो समझ जानने मु जानछि violation of constitution president can be removed only violation of constitution misbehavior कोठी को लिखाइन तो हाँ proved misbehavior and incapacity is written for the judges of Supreme Court ओके अच्छा 14 days and 1/4 साइन करिवा दरकार 1/4 साइन करथुवा दरकार दैट इज द कोरम ओके साइन करथुवा दरकार बुझियला 1/4 मिसबिहेवियर समिति प्रूव्ड मिसबिहेवियर किछ नाही ओके तो इम्पीचमेंट होचे 51 दैट इज देयर शैल बी देन इलेक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
headed by prime minister. ओके ओके ठीक अच्छे समस्त करेक्ट अच्छे ओके ठीक अच्छे हाँ गोटे गोटे क्वेश्चन द maximum life of an ordinance, the maximum life of an ordinance, option 7 month, 2 weeks, 6 month, 2 weeks, 6 weeks, none of the above. Answer ko habo. What is the maximum life of an ordinance? What is the maximum life of an ordinance? मन रखिबो quorum जदि पचारे quorum होजी 1/4. Okay, the maximum life of an ordinance. 6 months 6 weeks मु तो ऑप्शन ही नहीं खाली 6 months केमी लिखि देले भाई हिमांशु बेहेरा हाँ the maximum life of an ordinance it is actually 6 months 6 weeks. Okay, तो 6 42 days 30 plus 12 माने 7 month most approximately 2 weeks. Okay, तो ये आंसर कौन हो पारिबो एक्चुअली आंसर ये कौन हो पारिबो देखो एटा 14 days एटी 14 days दरकार किंतु देखला बेलू 2 week तो होउनी किंतु मोस्ट प्रोबेबली आंसर जब तुम देखिबो नॉन ऑफ द हो पारिबो बट इट इज द करेक्ट आंसर हो जे 7 month 2 weeks 7 month 2 week कारण फेब्रुआरी आसपारे फेब्रुआरी भी आसपारे मे बी ओके इट इज 7 month 2 week बट यदि खाली पचारता ना लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस खाली पचारता ना लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस खाली पचारता ना लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस देन ओनली 6 weeks then only 6 weeks okay life of an ordinance पचारतले only 6 weeks next okay next question next the president can dissolve the Lok Sabha on the advice of the president can dissolve the Lok Sabha on the advice of आंसर कौन हम चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा किए लिखले डी स्पीकर ऑफ लोकसभा भाई सौम्य केस पंडा डी हाँ प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा कहार जे स्पीकर रेकमेंडेशन अनुसार है भाई सुनीता डी स्पीकर रेकमेंडेशन अनुसार लोकसभा डिजॉल्व है तो मानु भाई जुआर मते नमस्कार तुम कुछ भी हाँ डीप हाँ पीएम पवित्र मोहन ओके पीएम that is Pavitra Mohan more recommendation okay it is the prime minister okay easy question ebe hard question kara once the Lok Sabha is dissolved before completion of 5 year then it is revocable it is irrevocable C both A and B D none of the above माने once the prime minister has advised दे सारी and the Lok Sabha is completely dissolved okay तापरे ओके पार्टी जे चाहिबो कि जे गवर्नमेंट चाहिबो आमे आउ थरे रिवोक करिया सॉरी कोन आउ थरे प्राइम ये करिया पई चाहूछु इज इट पॉसिबल
माने कहला once the Lok Sabha is dissolved before completion of 5 years, then it is revocable, it is irrevocable, both revocable है परिवो, irrevocable है परिवो, none of the above. Answer कौन हो? B. मन रखियो, it is irrevocable. Okay, it is irrevocable. Fresh election has to be held. Fresh election has to be held. Okay, next. I got a question. The salaries and emoluments of vice president is given in which schedule? Option A first, option B second, option C third, option D none of the above. Answer कौन? कौन आंसर? Okay, question X. The salaries and emoluments of the vice president is given in which schedule? NPT, non-proliferation treaty. NPT. It is NOTA. None of the above. None. Correct है समझता हूँ. Okay, none. यदि एडी पचार था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आइतले सेकंड है था ना. Okay, chairman of Rajya Sabha salary is given in the second schedule of Indian Constitution, but the vice president ro konosi jagare mention nahi, because vice president is getting salary because he is the acts as the ex officio chairman of Rajya Sabha. Third je schedule ko bhai. Okay, third schedule related to oath and affirmation. Okay, oath and affirmation. Next, ordinance making power of the president. Ordinance making power of the president. Okay. Clear, sir. Clear or clear? What a clear ach. Clear. Go answer. It is Article 123. Okay, Article 123. Ordinance making power of president. Okay, it is most important legislative function of president. Most important legislative function. Governor जब देखिबा governor रा 213. Okay, 124. Okay, 124 related to Supreme Court. It is Supreme Court. That is President Rule, 356 President Rule, और देखो State Emergency, और देखो कोई परिबो Constitutional Emergency. 360 Financial emergency. ठीक है समझता हूँ करेक्ट है. ओके, अच्छा गोटे क्वेश्चन. द प्रोक्लामेशन ऑफ emergency. The proclamation of emergency means national emergency, state emergency, financial emergency, none of the above. Answer कौन? The proclamation of emergency माने कौन? The proclamation of emergency means ता माने कौन? (352) national emergency. आउ कार को आंसर. The proclamation of emergency means what? The proclamation of emergency माने कौन?
नेशनल इमरजेंसी हाँ मन रखियो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी माने नेशनल इमरजेंसी देयर इज नो कांसेप्ट लाइक स्टेट इमरजेंसी ओके दैट इज कौन सी जगह स्टेट इमरजेंसी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं ओके इट इज प्रेसिडेंट रूल बट वी आर कन्वीनियंट फॉर आम कन्वीनियंस पाई आमे तो कौन कहूचे इट इज प्रेसिडेंट सॉरी कौन स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड 365 related to also state emergency okay okay very good समस्त करेक्ट अच्छे national emergency next question the office of president of india 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 okay कौन देखिए रियल एग्जीक्यूटिव नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जुडिशियल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेटिक हेड आंसर कौन हम ओके द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड और तुम ताको कहि परिबो टिटुलर एग्जीक्यूटिव डी जुरे एग्जीक्यूटिव ओके यू कैन से दैट लाइक दैट डी जुरे एग्जीक्यूटिव आल्सो अच्छा नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन करा while impeaching the president of india the parliament function as judicial body quasi judicial body C statutory body D none of the above आंसर कौन हम दुर्गा साई गुड इवनिंग सर एग्जाम सब बेले कैंसल हो जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब केमिति हबो प्लीज कहंतु वर्क फ्रॉम होम ओके ठीक अच्छे वर्क फ्रॉम होम आप यही सेक्टर करि परिबे यही सेक्टर रे माने जो थाई प्रिपेयर करूछ सेही काम कर लाइट रहइबो ओके से काम कले लाइट रहइबो अलवा काम रे जदी आपण मे भी पढि न परिबे कारण बहुत टाइम दबाउ सेतरे पळे ओके जुडिशियल जो माने कहूछ माने मोठू पैसा नै कि विष पी देबे सत को तम माने सॉरी मोठू का आपण नै पीबे मु आपण उठू नै कि पी देबी ओके जुडिशियल केमिति कहूछ ओके माने तमे माने क्वेश्चन देखु न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोन से एग्जाम रो देखु न अरे भाई सब एग्जाम रो क्वेश्चन देखो सब एग्जाम रो क्वेश्चन देखो तमे जानि न को एग्जाम रे को इजी लेवल बेले बेले गोटे गोटे क्वेश्चन पढुची आ से क्वेश्चन तमर को एग्जाम रे भी पके दे पारे ओके तो जुडिशियल केमिति कहूछ सौम्यकेश पंडा आई थिंक मु तुमको सौम्यकेश पंडा मोर क्लासेस करिचो कोठी नाटा मते सुनला बेले लागुची सौम्यकेश पंडा ओडी क्लास करिचो ओके जुडिशियल केमिति जुडिशियल कथा केमिति कहउछन आपण माने जुडिशियल केमिति कहउछन हां जुडिशियल केमिति कहउछन इट इज क्वासी जुडिशियल ओपीएससी 2023 क्वेश्चन देखि दबो जाई ओके ओपीएससी 2023 क्वेश्चन देखो जाई पढ़ीला ना नहीं ओके इट इज लो हैंगिंग फ्रूट टाइप रो क्वेश्चन ओके ए बड़ा क्वेश्चन भूल करबा कथा नुह जुडिशियल खाली सुनी जो क्वासी जुडिशियल सुनी ना क्वासी जुडिशियल बॉडी ही सुनी ना कुछ भी क्वासी जुडिशियल बॉडी एनजीटी ओके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैट सुनी ना आर्टिकल 323 ए 323 बी ओके क्वासी जुडिशियल माने कोन सेमी ओके तो बी विल बी द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऊपर क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहि चलो क्वेश्चन उडावे थरा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट
कौन देला वीटो पावर पार्डनिंग पावर डिसॉल्विंग स्टेट असेंबली डायरेक्टली डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी 352 ने डिक्लेयर करि परिबो वीटो पावर 111 okay that is suspensive veto absolute veto and pocket veto there is no concept of qualified veto pardoning power article 72 pardoning power the dissolving of state assembly directly kari paribo nahi dissolve kari paribo but directly kari paribo na the answer will be C okay very good next हाँ मु 323 ए एंड बी कहली 323 ए एंड बी कही 323 कहनी 323 ए एंड बी टिके बेले बेले आर्टिकल गुड़ा पढ़ अरे यार ओके कैट कहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आ ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर जो कि तुम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जाऊँ 323 ए रे एटा फॉर अदर मैटर्स ओके आ भितर डिफरेंस अच्छे 323 ए 323 ए एंड 323 बी रे भी डिफरेंस अच्छे डिफरेंस इज देयर ओके डिफरेंस इज देयर okay question number कोड थिला 9 नंबर it is 2 months okay it is 2 month easy question ता थिला 2 month next 10 नंबर को हबो okay 10 नंबर which of the following statement is correct the president is the supreme commander of armed forces correct it is a functions or powers of the president is the supreme commander of armed forces correct statement second the president can appoint prime minister without consulting any leader correct or incorrect answer are ko habo 10 number 10 number हाँ 10 number A will be the correct answer because there is no constitutional discretion power nahi there is no constitutional discretionary power okay there is no constitutional discretionary power okay the leader of largest party or majority party leader को ही तुमको अपॉइंट करियो पड़िबो क्यों प्राइम मिनिस्टर मन इच्छा जहा को ये करि परिबो नै के प्रेसिडेंट तो आंसर एटी हबो कोन करेक्ट पचारछि ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट vice president acts as the president during vacancy second if both office are vacant the speaker acts as the president answer ko habo 11 नंबर ऑप्शन देके आंसर ये करी लिखंदु so that it will be easy okay vice president acts as the president during vacancy if both the offices are vacant the president acts as the vice president the speaker acts as the president it is only one correct vice president for a maximum period of 6 months president no it is the chief justice of india jodi see chief justice of india absent achandi then the senior most judges of supreme court judges of supreme court the answer here will be 11A CJI acts as the president okay ठीक है समस्त करेक्ट है
Next, the president declares failure of constitutional machinery in a state under. Come answer. The president declares failure of constitutional machinery in a state under. Okay. Article 352 is related to national emergency. भल से सुनो national emergency. Article 355 कौन कहूचे मन रखो एटा दीटा provision कहूचे. Article 355 tells about two provisions. कौन कहूचे ना it is the duty of union to protect states in external aggression. Okay, ड्यूटी होची कार ना सेंटर रा ड्यूटी और यूनियन रा ड्यूटी आर्टिकल 355 रे कहूची इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट इन एक्सटर्नल एग्रेशन कोनोसी जदी एक्सटर्नल एग्रेशन होची कोनोसी बाहर कंट्री जदी कोनोसी स्टेट को अटैक करची इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट देम सेकंड रे कोन कहला इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन इट इज द ड्यूटी ऑफ सेंटर और यूनियन टू check or ensure whether a state is running according to constitution or not. ओके से कौन कहला 355 दीटा प्रोविजन देछि जे फर्स्ट है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर और यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट इन केस ऑफ एनी एक्सटर्नल एग्रेशन सेकंड कहला इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर और यूनियन टू चेक और एनश्योर दैट द वेदर द स्टेट इज रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट जदि क्वेश्चन पचारिबो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कोउ थरे ये करिछि स्पेसिफाई भी आर्टिकल 355 पाबो बट डिक्लेयर इमरजेंसी कोउ थरे करबो 356 रे ओके एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस हाँ ठीक अच्छे इंटरनल डिस्टर्बेंस हमें कौटी आगे ही प्रेसिडेंट रूल लगे देवा कौटी हमें वेस्ट बेंगल ओके ठीक अच्छे 355 कौन कहला सेकंड प्रोविजन इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर यूनियन टू चेक और एनश्योर वेदर द स्टेट इज रनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट जदि कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार चलुनी ताहले इट विल बी कंसीडर एज फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सेथरे कोन करिवो एठी ना प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करिवो इट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी तुम जानिछो ओके अनदर आर्टिकल इज आल्सो रिलेटेड आर्टिकल 356 365 it says that the state has to comply with the direction given by center okay given by the center okay article 365 कोन कहूची the state has to comply with the direction given by the center जदि center direction ने comply न करिवो suppose if any state fails with the comply with the direction of center then the president will consider it as the failure of constitutional machinery in the state so that it will be lawful to declare president rule or constitutional emergency or स्टेट इमरजेंसी इन द स्टेट ओके तो आर्टिकल 3 आम क्लीयर हो गला 352 जानते 355 रो दीटा प्रोविजन जानिले आर्टिकल 355 रो दीटा प्रोविजन जानिले देन आर्टिकल 365 इज आल्सो जानिले इज दैट क्लियर आर्टिकल 355 रो दीटा प्रोविजन जानिले at the same time article 365 जानले how 365 is related to article 356 is also clear माडी चलो next clear okay clear next question the vice president is elected by Lok Sabha Rajya Sabha both the houses of parliament electoral college of MP and MLH answer कौन होगा okay article 63 there shall be vice president article 64 Vice President ex officio chairman of Rajya Sabha. Article 65 Vice President acts as the president when absent vacant. Article 66 election of Vice President. Article 67 removal
removal. Article 69 oath of vice president. ओके तो एतिक आर्टिकल्स क्लियर. अरे भाई आर्टिकल पचार दबो, आर्टिकल पचार. विदाउट आर्टिकल पॉलिटी इज ए मिथ. ओके विदाउट आर्टिकल पॉलिटी इज ए मिथ. घोषिले पॉलिटी, विदाउट आर्टिकल पॉलिटी इज ए मिथ. ओके तो से भाई जो मैंने सिविल सर्विस दौरान विदाउट केसेस एंड आर्टिकल पॉलिटी इज आल्सो ए मिथ. ओके तो आंसर एटी हम कौन जे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट 67 टर्म ऑफ ऑफिस रिमूवल नहीं. सिक्सटी सेवेन हो चेक कर दबा. ओके हाँ खुशी लगे कहल बढ़िया कथा. नेक्स्ट एटा कौन गोटे पड़ेगा. ओके नेक्स्ट द मिनिमम एज वाइस प्रेसिडेंट एटा तुम जान 35 इयर्स. ए क्वेश्चन किसी वैल्यू ना ऑलरेडी कही सारी. द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ. ओके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आर्टिकल 64. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके इजी क्वेश्चन. अच्छा वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट केते बेले 16 नंबर. 16 नंबर आंसर कौन हम. 16 नंबर 16 नंबर कौन आंसर. वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट व्हेन. ये सब कंडीशन आर्टिकल 6 ये सब कंडीशन आर्टिकल 65 रे. आर्टिकल 65 ओके केते बेले केते बेले व्हेन प्रेसिडेंट रिजाइन्स डाइज रिमूव्ड. ओके इट विल बी डी ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. ओके वेरी गुड समस्त करेक्ट है. नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द वाइस प्रेसिडेंट. ओके वाइस प्रेसिडेंट दैट इज देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट. करेक्ट अच्छे एटा ओ एबे कहली तुमको रिमूवल टेन्योर एक्सेट्रा रेजिग्नेशन ओथ पावर ऑफ सॉरी यूनियन एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव. ओके तो आंसर एटी कौन हम 17 ए. 17 ए. नेक्स्ट 18 18 कौन हम 18 oath of the vice president कितना नंबर आर्टिकल देखिए. oath is given 69. oath of the vice president is administered by the president of India. okay president of India. attorney general article 76. article 76 attorney general is the highest law officer of the land. highest law officer of land. highest law officer of the land. okay is also a part of union executive. part of union executive is also a part of union executive. okay the salary of vice president कौन आंसर. the salary of vice president as a chairman. देखो क्वेश्चन है देछि कोन as a chairman of राज्यसभा. as a chairman of राज्यसभा. आज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पचारछि जदि एटा हटाई देई थाना एटा जदि हटाई देई थाना ताल आंसर नन ऑफ द अबव कहि थानो. से देछि आज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज पेड फ्रॉम. ओके दीटा सुनो गोटा होछि चार्ज्ड फ्रॉम अनदर वन इज चार्ज्ड ऑन. okay there is consolidated fund of India. article 266. article 266 re there are two concepts that is charged from consolidated fund of India and charged on consolidated fund of India. okay
charged on and charged from. Okay, এটা তো correct হব consolidated fund of India, but charged on और charged from ভিতরে difference টিকে দেখিবে. Okay, charged on কোন, charged from কোন. Okay, difference দেখিবে. Next question, find the correct statement. Find the correct statement. Find the correct statement. Find the correct statement. Vice President is eligible for unlimited re-election. Vice President must be a member of Parliament before election as a President. कौन? Before election. कौन answer? हाँ, it will be A. Okay, A. Vice President can be re-elected for a number of times. A number of times. So answer will be here A. Okay. So last question of this session. Last question. Answer कौन है? Last question of this session. कौन? Vice President can preside over joint sitting of Parliament. Second वाला, Vice President does not take oath of secrecy. Answer कौन? कौन आंसर? Vice President does not take oath of secrecy. It will be D. Okay, Vice President ro कौन ना, they will protect, defend the Constitution. Okay, the answer here will be D. अच्छा, next question. Gote question. If Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha is absent, who will preside the joint session of Parliament? Option: Chairman of Rajya Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha, any member, none of the above. Answer कौन होगा? सर टिके काम, हाँ सॉरी गलानी. Okay, जदि Speaker and Deputy Speaker both are absent, then who will preside? मन रखिबो, the preside, हाँ, it is Deputy Chairman, always Deputy Chairman. Chairman नुह, because he is not a member of Rajya Sabha. He is not a member of Rajya Sabha, so he does not preside over the joint session of Parliament. Till now, केते थरो joint session है? How many times joint session has been takes place? Till now, केते थरो joint session है? केते थरो joint session है? How many times joint session? ए पर्यंत केतेटा joint session है? Deputy Chairman of Rajya Sabha, correct समस्तंकर अछि. ए पर्यंत केतेटा joint session है? हाँ, it till now there are 3 times. ए पर्यंत 3 times है. Okay, 3 times. ए पर्यंत 3टा joint session है. 3 times. Okay, तो चलो आज एति क्वेश्चन थिला. Okay, तो थैंक यू. थैंक यू. ओके, नेक्स्ट क्लास रे देखावा, डिस्कशन करवा अलग किसी टॉपिक रो क्वेश्चन. ओके, आ परठार मु तुमको हार्ड क्वेश्चन आनिबी. ओके, इजी एते भी आनिबी आ टिके टफ क्वेश्चन, देन तमर स्टेटमेंट वाला भी आनिबी. ओके, थैंक यू. समस्त एग्जाम बहुत भलो जो एग्जाम पाइन दउछ. ओके, थैंक यू.